Good morning, class. Once again, welcome to the lecture of corporate mergers and acquisition. Now, in today's class, we'll discuss what are the causes of mergers. Merger के क्या-क्या reason है? ये देख लेते हैं फ्लो चार्ट. मर्जर क्यों होता है? तो कंपनी हमने पहले डिस्कस किया है कि या तो मर्जर के फॉर्म में एक नई ऑर्गेनाइजेशन मर्ज होके बनती है या तो एब्जॉर्प्शन होती है. बट ईदर वेज व्हाट इज द नीड टू डू मर्जर? सो दीज आर फ्यू रीजंस कि मर्जर क्यों होते हैं. नंबर 1, टू क्रिएट सिनर्जी, देन स्ट्रैटेजिक चेंजेस, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, फॉर surplus cash, to reduce the tax liabilities, and to deal with the stagnation, market penetration and diversification. ये कुछ important reasons हैं mergers arise होने के. mergers activity क्यों होती है? So let's discuss one by one. Synergy, where 1 plus 1 makes 11, right? So when two minds can think better than a single mind. So this is a popular phrase. So synergy also works here in case of merger कि जहाँ दो ऑर्गेनाइजेशन मर्ज होती है, हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, जिस भी तरीके का मर्जर हो, so they can better create in terms of output, in terms of efficiency, in terms of the customer service, everything. So synergy, a kind of a situation where the combined firm is more valuable than the sum of the individual combining firms. Firm A plus firm B. Individually, they might be successful, they might be worthy, but when they become firm AB, they will be having more, they will bring more synergy to the output, to the efficiency, to the productivity and all. Secondly, strategic change. When we talk about the external environment बहुत dynamic है. It keeps on changing on a regular basis. So to ensure the regulatory framework and technological innovation, one single organization may not be that ready to adapt to the changes. एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए इतना रेडली तैयार ना हो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मर्जर, टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन, बी इट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, सो जब वो मर्ज होती हैं सो ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजिक चेंजेस लाने में, इनकॉर्पोरेट करने में काफी मदद मिलती है. स्ट्रैटेजिक चेंजेस इन टर्म्स ऑफ bringing in new office, new staff, new funding facilities, anything. Global competitive strength, we all know the companies are becoming global across the globe. अलग अलग countries में उनके operations होते हैं. So to make themselves globally competitive, कि हम अपने global counterparts के साथ अच्छे से compete कर पाएं, so merger helps there also. And when we talk about the surplus cash as in terms of the availability of fund, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हो सकता है एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस रिसोर्सेज को अवेल करने के लिए रिलेटेड फंड ना हो. सो द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इज easily available when we talk about two or more organization clubbing, merging or absorbing one another. टैक्स लायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, stagnation, where we talk about the stagnant economy. It may be defined as an unsatisfactory growth rate which is likely to occur as an industry reaches its stage of maturity. Stagnation होता है कि after a certain point of time हर ऑर्गेनाइजेशन का एट इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है. तो सैचुरेशन के बाद कंपनी प्रॉफिट अर्न करना बंद कर देती है. सो स्टैग्नेशन को ओवरकम करने के लिए भी मर्जर काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि दो ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो जाएंगी तो जो दो ऑर्गेनाइजेशन मर्ज होकर नई स्ट्रैटेजीज, नए इनोवेशन, नए आइडियाज़ पे काम करेंगे, तो दैट माइट ब्रेक द मोनोटनी ऑफ द सिंगल माइंड ऑफ द सिंगल कंपनी. The second
last is the market penetration. Market fluctuate होती है depending upon the market size, depending upon the target audience. The markets keeps on fluctuating, right? So depending upon the penetration rate, the new and large market for the company may be developed for existing product as well. Market penetration strategy, it is pursued within markets that are becoming more international or global. Market penetration, for example, dealing with the new customer base, dealing with the new market base. Market penetration में भी काफ़ी help होती है when we talk about merger. And diversification, definitely diversify करने के लिए when we talk about Tata's from pin to aeroplane, everything they are going to sell. So merger helps the organization to diversify their business if they want to diversify in terms of the market, in terms of the new product. So these all are the major causes of merger. Thank you.